and every time I came close to the horse, or I was riding that horse in one single day of rehearsal, and I really missed my dad because मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे घोड़ों के साथ कुछ करें, because horses were his passion. He used to love horses, like उनके अपने बच्चे थे. He used to own horses because my dad would have loved to see me as in a vardi. Yeah, क्योंकि वो कहते थे, "Go, you should do something like a cop or something. You're going to be fabulous in that." And I was shooting. While I was shooting this, I used to miss my dad a lot because I lost my dad a few months before I started shooting for Shiksha Mandal. हो सकता है कल आप इस तरह के डॉक्टर के सामने बैठे और उसकी दवाई लें. So the whole society, the whole nation has to be aware of something like this. Teacher, generations आप खराब करके देंगे. आप ही नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाएंगे क्या? आप वहाँ टाइम पास करेंगे. हाँ, फाउंडेशन ही खराब हो जाएगा देश का. टीवी था, हम थिएटर से आए थे, थिएटर था. उन दिनों दूरदर्शन करते थे, फिर टीवी सीरियल शुरू हुए, फिर वो सासबू आया, हम हट गए. आपको लगता है कि वो आपका रिजेक्शन किसी ने आपको लिया नहीं, वो बड़ा रिजेक्शन है, लेकिन सोचो 200 करोड़ आपके ऊपर जो लगाया हुआ था वो डूब गए, वो कितना बड़ा रिजेक्शन है. So firstly, welcome to OTTplay, and we watched the trailer and it is so engaging, and it's like all these three characters so contrasting one from another. So the first thing I would like to know that what was the most intriguing point for all of you to be part of such a story? तीनों से पूछ रही हूँ. Story, when you say that you loved the trailer, then there is much more in the story. What you're going to, those 9 episodes when you see. So when I say that, the answer is there. Why we wanted to do it. I rather want. If the trailer is so gripping, imagine the story, what it had. हम सब ने अपने characters को समझा, पढ़ा, and we were all just like pulled into the script because our director Afzal sir was he's also the script writer. He's written it himself, so he was very involved in right from scratch to actually putting it together and then calling all of us on board as actors. There are many other actors also who've done fabulously well on the show. So I think the script and also what it brings to light, the concept. There's a lot of thrill, there's action, it's high on drama. And yeah, I mean, for me, it's an honor to be working with such fabulous actors. And wearing the uniform. Yes, wearing the uniform. uniform. Yeah, I wish I could. But I have. वो एक दूसरे शो में मैंने पहना. Yeah, it was my first time in the uniform. And hopefully, people will love me in it as well because it's the first time that I'm also doing a lot of action. Actually, पिछले साल एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था, आपने तो सब कुछ कर दिया है, अभी what is on your wish list? And I said, यार मैंने action अभी तक नहीं किया and I want to do action. And कहीं ना कहीं I think I've manifested this for myself. And what a show to manifest this because it's also my first time association with MX. क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है ना, लग रहा है कि ये एक जो बंदा है जो एकदम ना like he is one of the in my interpretation ये सही वाला बंदा है जो like looking for the searching for the truth, and then she is part of the investigation. And then he is the man who is like 5 साल में बना देंगे पैसा उतना, मतलब wizard champion torch bearer. People who like my dark roles, I'm sorry, this is going to disappoint you because I'm not playing a dark character. But मैं और भी चीजें कर सकता हूँ, तो देख लो यार. This is his versatility coming in play. I'm very versatile. अच्छा इंसान कर रहे हैं इसलिए. देखिए, the best thing about acting is that you can pretend to be other people. Yeah. My dad always wanted me to be a doctor. Okay, I'm not a doctor in this one, but मैं medical की तैयारी का coaching चलाता हूँ. So close, almost a doctor, sort of a thing. So I can tell my dad that see, I couldn't become a doctor, but I can pretend to be one. Mentions father, and that was the first thing when Shiksha Mandal's trailer came out. I actually got very emotional about it because my dad would have loved to see me as in a vardi. Yeah, क्योंकि वो कहते थे, "Go, you should do something like a cop or something. You're going to be fabulous in that." And I was shooting, while I was shooting this, I used to miss my dad a lot because I lost my dad a few months before I started shooting for Shiksha Mandal. And every time I came close to the horse, or I was riding that horse in one single day of rehearsal, and I really missed my dad because मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे घोड़ों के साथ कुछ करें, because horses were his passion. He used to love horses, like उनके अपने बच्चे थे. He used to own horses.
So when I started writing that, I almost cried because, I mean, I did cry, thinking about my dad, that somewhere up there, he's very happy watching me actually be able to ride a horse and, you know, make it run and sprint and gallop and all of that. So, yeah, very sorry. You spoke about your dad, so I got a little emotional about that, yeah. The best part of being an actor is that you can pretend to be people that you are not. And there are so many other people. और हर उसमें रुचि है मुझे. And then it seemed really like a good idea also. The part that was offered to me, the story, the people that were involved, 2 of them are sitting beside me. And it seemed like it was a good option for my career as well, because you have to, at somewhere you have to have an outside eye on, and I believe in curating your career, and you can make some mistakes here and there, but then it's like, you know, for me it's like that, like, you know, I'm curating my career as well. And being diverse and versatility is in my nature. It's not something that I have specifically said, oh, I'm going to focus on this right now. मुझे रुचि है, अलग-अलग चीज़ों में रुचि है, तो मैं अपने करियर के साथ भी, अपने क्राफ्ट के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करना चाहता हूँ. सर, कमिंग बैक टू यू, आपका जो कैरेक्टर है, ऑब्वियसली जैसे मैंने वो डायलॉग के बारे में बात करी थी कि 5 साल में उतना पैसा कमा लेंगे, बना लेंगे, नॉट कमा लेंगे, बना लेंगे, लाइक इट्स लाइक नोट छापेंगे टाइप. हाँ, सो मतलब ऐसी, मतलब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि कैरेक्टर के बारे में विदाउट गिविंग एनी स्पॉइलर क्या चीज़ आप बता सकते हो, मतलब क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जस्टिफाई कैसे करेगा ऑल द क्राइम दैट ही इज डूइंग, है ना? तो नो, जाहिर सी बात है, वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन मैं, हाँ, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, उसके कुछ अच्छे गोल भी हो सकते हैं, तभी कभी वो ग्रे भी हो जाता है, लेकिन इस तरह का क्राइम जहाँ आप मार रहे हैं वो उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, यू नो, किसी तरह की किलिंग को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अनलेस इट्स इन रिटेलिएशन, कि कोई आपको मार रहा है तो आप बचाओगे ना अपने आप को, वो अलग बात है. बट तो पर ही कैन हैव हिज ओन रीजंस, ही कैन हैव हिज ओन, इंस्टेड ऑफ डार्क ग्रे एरियाज, यू नो, जो उसको बिल्कुल वाइट ही लगता है. सो वो जब देखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अगर आपको ये बहुत पसंद आया है तो, नहीं तो कई बार होता है कि प्रोमो में सब कुछ होता है, वो बेस्ट होता है, उसके बाद there is a very interesting track in his side of the story. There is one character with whom there is a certain bond that he shares. Is quite interesting. Specifically, if we talk about the issue that this show is addressing, that is like the all the corruption that is happening in the education sector, and especially medical entrance exam. मतलब medical is like, you know, जब आप doctor बनते हो, the most sought out, the most difficult also. डिफिकल्ट, बट देन एट द सेम टाइम मतलब बाकी सब चीज़ों में ना आप जुगाड़ पे चीज़ें कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर आप जब डॉक्टर के पास जाते हो आपको लगता है कि ये मतलब नेक्स्ट टू गॉड, राइट, वो ठीक कर देंगे, इट्स लाइक दैट. सो वहाँ पे जब करप्शन होता है ना, तो अंदर से इंसान, लाइक इफ वी लुक एट दोज थिंग्स वी फील लाइक, oh my god, like, you know, tomorrow. That's why the example which you have given, वो तो खैर हर एक लेवल के एग्जाम्स में हो रहा है, but let's take this medical, जो डॉक्टर आपने बोला ना कि अगर ऐसा होगा उसके पास, that's what I've been trying to say. It's important for every audience to see it, because even if you are not directly affected by these exams, the धांधली जो हो रही है, corruption और scam, हो सकता है कल आप इस तरह के डॉक्टर के सामने बैठे और उसकी दवाई लें. So the whole society, the whole nation has to be aware of something like this happening, and the people, authorities जितना कर रही हैं, इसका मतलब उनको और कुछ करने की ज़रूरत है. जबकि ये भी बात सच है कि एक लॉ बनता है तो उसको तोड़ने के 3 तरीके निकल आते हैं. So it's cat and mouse constant. See, there is a loophole which is exploited. Okay, so through the show also you will realize at some level that there is this loophole which can be exploited, which is why there is scams that happens, because when something is very sought after, then that becomes more dearer. Like, you know, how can we, what is there a shorter way to sort of get to that place, because there is so much money there, no? हाँ, and then I mean there's this dialogue in which it says कि, like, you know, it's not just about passing the exam, you have to get the rank so that you can, you know. So और ये मेडिकल में तो ये मेरे एटलीस्ट जनरेशन में वैसा ही था कि दैट वाज द टफेस्ट वन. नहीं, और सिर्फ मेडिकल ही नहीं, रेलवे, वो एक्सीडेंट करवाएगा ना कभी, उसका भुगतान कोई और भुगतेगा, वो कहाँ बैठा है वी डोंट नो, वो कहाँ जाके बैठेगा. टीचर,
जनरेशन आप खराब करके भेजेंगे, क्योंकि आप ही नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाएंगे क्या? आप वहाँ टाइम पास करेंगे। हाँ, फाउंडेशन ही खराब हो जाएगा देश का। मैंने एक वीडियो भी देखा था जहाँ पर कोई टीचर थे एंड वो चेक करने आए, सर्वे करने आए, जैसे मेरा कैरेक्टर है वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर क्या करप्शन चल रहा है, तो चेक करने आए तो टीचर से कहा कि आप बोलिए ABC, उनको ABC to Z नहीं पता था कई एग्जांपल्स टीचर को, तो वो क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? एक स्टेट में एक टीचर पकड़े गए जो 4 जगह से नौकरी की सैलरी ले रही थी। Wait, like, you know, this corruption and what happened is that ki when you are a student, you look up to your teacher. When you are a patient, you believe that the doctor is the God for us, and that's why. Coming back to your character, you know, you were saying ki like, you know, it makes your father proud, surely. But tell me, like, it looks like you are, like, you know, you are searching for the truth in a man's world. Like, you know, that's a vibe that we are getting, and we also understand it. That's the reality. What are the things that you probably got to know about the existing struggle of a female cop that probably you got to know only because, you know, you're playing the part in the show? No, you know, in fact, I think Shiksha Mandal, in Shiksha Mandal, Anuradha has a lot of standing. ऐसा नहीं है कि she is facing pressures or you know, facing hierarchy in a you know, in any of the sexes, that oh, just because she is a woman she is being treated. Gender politics बिल्कुल भी नहीं है in Shiksha Mandal actually. In fact, वो इतनी entrusted है कि higher authorities direct उसी को you know, trust करते हैं कि ये वो कर सकती है. And Afzal sir has made sure that Anuradha is a symbol of, you know, strength and knowledge and everything that, you know, is required of an SP and somebody who's heading the special task force unit. So ऐसे तो कोई scenes नहीं है, but yes, on a personal level, she does find it like it is, वो अपने husband के relationship में या उसके dad जिस तरीके से expect करते हैं कि नहीं वो तुम्हारा पति है तो तुम समझ के ले लो. In her personal life, she does go through that. You know, just because I'm a woman working, do I have to make all the compromises? Relatable. I think any working woman will relate to that. And not that her husband is bad or anything. She has a beautiful relationship there. And some of the most vulnerable moments of Anuradha you'll be able to see when it comes to her husband's equation. But tell me, like, when it comes to, you also created your space, like, in this industry, and this character is also kind of, you know, doing the same thing. Where do you connect with the character, your journey, if you can draw the parallel between your journey and her journey? I think, yeah, Anuradha obviously studied, educated herself, got herself that position. She would never take the shortcut. For me, I didn't really have any formal education in you know, I did have a great training during my Miss India during that. But I'm talking about I didn't complete my actual education. I was a first year dropout, commerce dropout. So I didn't really complete my education on that front. But I had my struggles. I had a lot of struggles to get to where I am, what I'm doing, how relevant I wanted to be. Anuradha probably finished her education and she worked up her rank. So that kind of is a little different. Also, Anuradha came from a backdrop of where her father was already in the law, and you know, she had her kind of a guidance, guidance from the father. Me, on the other hand, I took a completely different industry. So Anuradha and Gauahar would probably be a little different, other than the fact that they're both very strong-headed. Before I let you go, guys, like, the last thing that I would like to know is that the contribution of OTT platforms to the entertainment space, right? Like all of you, like the way we got to see the versatility of the character that you played is also happening because of the OTT platforms. Ours is especially, we have created the space for the OTT content. Yes. So tell us a little more about how you guys feel about the contribution of that. क्योंकि अभी यहाँ पे it is purely story and craft. यहाँ पे वो box office का pressure नहीं है, लेकिन अच्छे performance का pressure है. Like, we really watch. Box office तो इसमें भी है ना, कितने लोग देखते हैं. Subscription. नहीं, सब्सक्राइब तो उन्होंने वो, हाँ, सब्सक्राइब तो उन्होंने वो प्लेटफॉर्म किया हुआ है. आप वाला कितने लोग देखते हैं?
डिफरेंट बिजनेस मॉडल. ओके, जो थिएट्रिकल का बिजनेस मॉडल है वो अलग है, बिकॉज वो 3 दिन का वो जो एंड देन द होल शेयरिंग रेवेन्यू शेयरिंग रेशियो इज वेरी डिफरेंट एंड ऑल दैट. वो प्रेशर नहीं है, बट देयर आर अदर प्रेशर्स. अब मैंने भाई बहुत टाइम से मना करता आ रहा था, फिर ग्रहण आया तो किया, फिर टब्बर आया तो किया ना, अब ये आया अलग है. पर ऐसा नहीं है कि फिल्मों में मैंने इस तरह का काम नहीं किया. मैंने सलीम लंगड़ा वो सब भी किया है, यू नो. पर मेरे लिए एक और खिड़की खुली है, और इसमें मुझे ये फायदा है, जैसे ग्रहण में अगर आपने देखा है तो 8-7 एपिसोड तक तो चुप ही रहता है, एक एक लाइन बोलता है. हाँ, एक एक लाइन बोली है, सिर्फ लास्ट में जाके वो लगातार 10 मिनट के लिए बोलता है. वो तो कट हो के दिखाया. मैंने तो एक ही गो में वो पूरा का पूरा विटनेस बॉक्स में किया ना, यू नो. तो तब वो किरदार बोलना शुरू हुआ बाहर आता है. हाँ. जी. पर इसमें सिर्फ ये फायदा है कि वो आप 3.5, 4, 5 घंटे ले सकते हैं उसमें, यू नो. For a writer also, for a director also, for an actor also, you know. But TV था, हम थिएटर से आए थे, थिएटर था. उन दिनों दूरदर्शन करते थे, फिर टीवी सीरियल शुरू हुए, फिर वो सासबू आया, हम हट गए, यू नो. फिर एक सिनेमा में भी हम कोशिश की कि ज़्यादातर काम ये करें, यू नो. तो एज एन एक्टर आपको तय करना मैं किस तरह का काम करना चाहता हूँ. बट देखिए ये फैक्ट है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं फॉर ऑल, फॉर टेक्नीशियंस, फॉर एक्टर्स, फॉर स्क्रीन प्ले राइटर्स, फॉर म्यूजिशियंस, जिनको भी देख लो आप, opportunities definitely बढ़ गई हैं because now there's another medium. But as an actor you still have to prove your mettle, you still have to keep going. तांडव से पहले मैंने 3 projects किए थे OTT पे. People remember them, they remember me as Riya from The Office, but they were not as impactful. तांडव में इतने लोग थे, more than 30 actors, and name it, Saif, Dimple ji, Sunil Grover, all of them were there. But somehow Maithili worked for me, and even though it was just one of my most subtle characters where I didn't have to display much, but it worked wonderfully for me, and that's how Tandav ke baad is when I got the biggest part, which is bestseller, Salt City. All these things made a big impact in my life, and it doesn't matter कि आप फिल्मों की comparison करें या नहीं करें, but यहाँ पर भी आपका काम ही बात करेगा. And what about you? Because from the time OTT came and from the time your performance started getting noticed by the audience, do you think OTT platforms have some contribution to that also, where the audience is more receptive? Let me first tackle the word struggling that you used. I don't think I struggled at all. I came here with dreams in my eyes and I'm very happy that I'm living my dream. बचपन में मैंने सोचा था कि ये करूँगा और मुझे करने मिल रहा है और उसके बहुत पैसे भी मिल रहे हैं. तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये. सोचा मैं सपने देखता था, लेकिन आपको वो कभी सपना साकार भी होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है सपने साकार. तो ये मेरा साकार हो गया. आई डोंट थिंक स्ट्रगल तो उसके बाद है. स्ट्रगल जब आपको पहली अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो ये भगवान ने मुझे दिया कि अच्छे लोगों के साथ जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, अच्छे रोल्स दिए और अच्छे प्रोजेक्ट्स में मुझे काम मिला. वो 3-4 जो मेरे शुरुआत के निकले थे. सो दैट्स द स्ट्रोक ऑफ लक. दैट वाज माय गुड फॉर्च्यून. ऑफ कोर्स आई आल्सो पुट एवरीथिंग दैट आई हैड इन इट एंड पुट द वर्क आल्सो. But after that is a struggle because there are many aspects of being an actor. Acting is easy, being an actor is difficult. Okay, acting एक बार सीख लिया आपने तो आपको पता है, you have the set of tools. What is the difficulty See, being that? the life of an actor, because one, you have to also, anybody, be it a star, be it somebody who is just starting off auditioning and trying to find a job, struggle is always there. Rejection is always there. अभी जितना बड़ा आपको लगता है कि बड़े स्टार बन गए, उनको रिजेक्शन, आपकी फिल्म 3 दिन में उतर जाती है, पिट जाती है, कोई नहीं देखता है, करोड़ों का नुकसान होता है, 100, 150, 200 करोड़ का नुकसान होता है. वो रिजेक्शन ही है ना, वो एक अलग लेवल का रिजेक्शन है. कितने एक्टर्स हैं जो आपको लगा था कि इतने बड़े स्टार्स बनेंगे, वो आए और किसी को याद भी नहीं है, और आपको लगता है कि हो आपका रिजेक्शन किसी ने आपको लिया नहीं, वो बड़ा रिजेक्शन है. लेकिन सोचो 200 करोड़ आपके ऊपर जो लगाया हुआ तो वो डूब गए, वो कितना बड़ा रिजेक्शन है. इट्स अलग अलग. सो आई डोंट बिलीव इन दिस. स्ट्रगल तो जिंदगी भर जो भी है, किसी चीज़ में आपको अच्छा करना है, बेहतर होते जाना है, तो वो स्ट्रगल तो बहुत ज़रूरी है. इट्स गुड दैट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रगल. सो दैट्स वन थिंग. देयर इज मोर वर्क, लाइक दे ऑल सेड, देयर इज मोर वर्क फॉर एवरीबडी नाउ. एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस, कि मेरा एक जगह पे दिमाग खुला था, दिस फॉर्मेट, द OTT प्लेटफॉर्म इज अ लॉन्ग फॉर्मेट.
एपिसोडिक इसमें होता है. इट इज एम्पावरिंग टू स्टोरी टेलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली. इसीलिए तो हम कहानियों का हिस्सा बनते हैं ना. हम लोग जो कैमरा चला रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, सब लोग ये कहानी का हिस्सा बनते हैं. तो मेन चीज़ कौन है कि क्या कहानी है, कौन कह रहा है इस कहानी को. कहानीकार के लिए ये ज़्यादा एम्पावरिंग है क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट में आपको एक कहानी देने का मौका दे रहा है. Sure. Well, on that note, I wish you all the best, and I hope the show does really well, and maybe a season 2. Yeah, inshallah. And on I'm that signed for note, 3 seasons. Yeah, me too.